I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts from mathematics. आज हम देखने वाले हैं consistency of homogeneous system of equations. हमने पिछले वीडियो में देख लिया था consistency of non-homogeneous system of equations क्या होती है, क्या होते हैं conditions, कैसे solve करते हैं examples. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे matrices का ही एक topic that is application you can say consistency of homogeneous system. हमें पता है homogeneous system क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है. ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b जहाँ पे ये b क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है. तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है homogeneous system of equation. So you can also express this system as ax equals to z. This z represents a zero matrix or null matrix. So you can either write it as ax equal to b or you can write it as ax equal to z. Both are correct. So let us discuss the conditions. क्या है conditions? Now suppose given an equation, system of equation ax equals to z, that where it have m equations and n unknowns. तो first condition क्या कहती है, m is not equal to n. Say same as non-homogeneous, अगर equations are not equal to a number of unknowns. मतलब क्या, अगर तीन equations ऐसे हो सकता है केस जहाँ पे तीन equations है but चार unknowns है, चार unknowns है x, y, z and t, but equation तीन है. और you can have four equations and three unknowns, ऐसे भी हो सकता है. So where in such cases, what do we check for the consistency? We check the rank. Check what is the rank of A, what is rank of A, Z, मतलब क्या, A augmented Z, A augmented matrix. So we know how to find how to express augmented matrix, how to find the rank. तो दोनों की rank check करो, अगर rank equal आती है तो obviously it is going to be consistent. And if it is consistent, then we have a solution. Now it may have a trivial solution or a non-trivial solution. Means what trivial मतलब क्या, एक यूनिक solution. Trivial solution मतलब क्या, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी. जो भी अननोन्स होंगे उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, इसीलिए वो कहा जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन. क्यों जीरो होगी, बिकॉज इसके राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी नल मैट्रिक्स है. तो जो भी इक्वेशंस हमें मिलेंगे मैट्रिक्स में, जो इक्वेट करेंगे वो इक्वल टू जीरो ही होंगे. तो वो हमें क्या देगा, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा. और अगर ऐसी केस आती है जहाँ पर रैंक is less than number of unknowns, then it is going to have a non-trivial solution, or you can call it as infinite solution, infinite many solutions. So the same conditions applied, or same is applied for the case where we have number of equations equal to number of unknowns but it is greater than 3. Okay, so same process is applied. Find the rank, check the consistency, check if it is consistent, check what is the solution, whether it is going to have a trivial solution or non-trivial solution. Okay, the third case says m is equal to n equal to 3. The same as we have discussed in previous video. Non-homogeneous के लिए जो देखा वही है. m equal to n equal to 3 मतलब क्या, 3 cross 3 मैट्रिक्स होगा. तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसकी डिटर्मिनेंट. अगर डिटर्मिनेंट हमें क्या वैल्यू मिलती है, नॉन जीरो मिलती है, हम डायरेक्टली ए इनवर्स से भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होता है. बिकॉज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए इनवर्स, तुम्हारा कुछ भी हो मल्टीप्लाई तो जीरो मैट्रिक्स से ही होगा, तो इसकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जीरो ही होगी. तो ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो हमें हमारा रिडक्शन मेथड, दैट इज दिस मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड, वो यूज करना होगा और उससे हमें सॉल्यूशन मिलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो ये कंडीशंस अगर देखोगे तो सेम है जैसे नॉन होमोजेनियस के लिए हमने डिस्कस कर लिए. बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते वक्त हम यूनिक के अलावा क्या लिखेंगे, ट्रिवियल, बिकॉज इट इज a by default value that is 0 which we are going to get. Okay, let us discuss examples. So the question says solve the following system of equation. Given is the system of equation 2x minus y plus 3z equal to 0, 3x plus 2y plus z equal to 0, x minus 4y plus 5z equal to 0. So let us write down the matrix form. We will go by reduction method directly.
सो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, 2 minus 1 3, फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो मिलेगी, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 2 1 and 1 minus 4 5. This is our matrix A. Then x y z, that is unknowns matrix, matrix X, and 0 0 0, that is null matrix, matrix Z. So this is nothing but AX equals to Z form. So augmented form क्या होगा, A augmented Z is going to be 2 minus 1 3 separated by a straight line, 3 2 1 1 minus 4 5. So now we will apply a transformation on this matrix and reduce it. So what can be the first transformation we can make here? We can make here is interchange R1 with R3, which will make our further transformation simpler. So when we interchange, ये matrix हो जाएगा 1 minus 4 5. Second row as it is, third row will be now, which was first the previous first row in previous matrix. Further now, we can perform the transformation as R2 minus 3 R1 and simultaneously R3 minus 2 R1. So this is going to be 1 minus 4 5 0, 3 minus 3 0, then 2 minus 12 minus ये होगा 2, and this is minus minus plus 12, so that is 14, then 1 minus 15, that is minus 14, and this all will remain 0. Third row, R3 minus 2 R1, so 0 minus 1 minus minus plus 4 2s are 8, so ये होगा 7, then this is going to be 3 minus 10, so this is minus 7 and 0. Further, now if you observe this 7 and 14 is multiples, so we can perform the transformation as 2R3. Instead of interchanging, taking the bigger term, not necessary, the on the down, not necessary. So 2R3 minus R2 भी कर सकते हैं. So ये हो जाएगा 1 minus 4 5 0 0 14 minus 14 0 0 0 14 minus 14 0 0. Also, if you want, you can perform a transformation here as R2 divided by 14. That can also be done, or you can also not do, and then later on remove the from the equation. That is also okay. So this is nothing but what the form we can. This is not, if we express back in the matrix form, this will turn out as A minus 4 5 0 14 minus 14 0 0 0 into x y z equals to 0 0 0, which is our Ax equals to Z form. So from this form, if we extract the equations, so now we have, but before we extract equation, is it consistent? If you observe from this equation 1, what is rank of A? Rank of A is 2. Rank of A augmented Z क्या है? ये भी 2 है. So therefore we can say rank of A is equal to rank of A augmented Z, which is equal to 2. But what are the number of unknowns we have here? Number of unknowns is equal, that is n is equal to 3. So r is less than n is the case. So it is going to have a non-trivial solution. So what is that solution? So we can say here system is consistent and possess
infinite number of solutions. So what are the solutions? So let us check from equation star. So from equation star we have equations as x minus 4y plus 5z equals to 0 and minus 0x 14y minus 14z equals to 0. So that is nothing but if we take 14 common and shift तो ये 0 होगा तो ये equation होगी. That is nothing but this is going to become y minus z equals to 0. Now here we have two equations and three unknowns. So in such case we have discussed in the previous video also, we introduce a free variable. We consider any term as a any one unknown as a free variable. So let us consider here z as a free variable t. फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने बताया है वो ऐसे टर्म वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू लेगा. तो z t इक्वल टू 0 ले अगर हुआ तो z की वैल्यू 0 होगी, अकॉर्डिंगली y की वैल्यू एंड x की वैल्यू. t इक्वल टू 1 लिया गया तो z इक्वल टू 1, अकॉर्डिंगली y एंड x वेरी होगा. तो जितने तुम t के वैल्यू लोगे उतने हमें x y z की वैल्यूज मिलेंगे एंड दैट विल बी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव. So here therefore now z equals to t लिया है तो इस इक्वेशन y माइनस z में सब्स्टिट्यूट कर देखो y माइनस t इक्वल्स टू 0 होगा. तो इससे y की वैल्यू मिल गई t and when we substitute in the first equation we have x minus 4y plus 5z equals to 0. So that वो y की जगह हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, z की जगह भी हमें क्या मिला है t है तो ये हो जाएगा x plus t equals to 0. That means x is equals to minus t. So therefore solution set क्या मिल गया हमें? X is equals to minus t, y equals to t and z equals to t. This is the solution set, that is infinite solution. अगर मैंने t की वैल्यू 1 ली तो x y z क्या मिलेगा? I am writing this for information. X होगा -1, y होगा 1, z होगा 1. t की वैल्यू 2 लोगे तो x होगा -2, y होगा 2, z equal to 2 and hence the solutions. I hope this example is clear. Let us move on to one more example. The question is, does the following system has a non-trivial solution? So ये पूछा गया कि ये जो सिस्टम दिया गया है इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है या नहीं चेक करो. मतलब क्या नॉन ट्रिवियल? मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो इस सिस्टम को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर ट्रिवियल भी हो सकता है. तो लेट अस चेक. सो टू चेक वी विल फर्स्ट एक्सप्रेस इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. सो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसका? वन माइनस वन वन, 1 2 minus 1 2 1. This is matrix A, x y z, and this is matrix X and this is 0 0 0, that is the null matrix. So what will be the augmented matrix? E augmented Z, ये होगा 1 1 1 minus 1 1 1 2 minus 1 2 1 3, separated by straight line 0 0 0. So what can be the transformations we can perform here? We can perform here is, so this is here 1 1 2 minus 1. So R2 minus R1 and R3 minus 2R1. So ये transformation होगा 1 minus 1 1 0 0 2 plus 1 होगा ये, that is 3 minus 1 minus 1 minus 2. Then 2 minus 2 0 1 plus 2, that is 3, and 3 minus 2, that is 1. Now this is both similar 3, so it is a simple one. We can perform the transformation R3 minus R2. So you have 1 minus 1 1 0 0 3 minus 2 0 0 0 1 minus minus plus 2, so ये होगा 3. So now if you observe what is the rank of A क्या होगा यहाँ पे?
सारे रोज में एक तो नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, सो रैंक ऑफ ए हो गया 3. व्हाट विल बी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरे or excluded in this straight line, or you can say temporarily don't look at the straight line, consider the straight rows directly. तो सारे तीनों रोज में एक तो नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड हो गया 3. So here we observe rank of A is equal to rank of A augmented Z, which is equal to 3. And number of unknowns कितने हैं हमारे पास? 3. So we observe here that rank is equal to n. So therefore system is consistent, and when rank is equal to number of unknowns, it is going to have a trivial solution. So system is consistent, we observe, and has only trivial solution. So what is that solution going to be? The solution is going to be, if you express the equations, we are going to have the equations as x minus y plus z equals to 0. From the second row, we are going to have 3y minus 2z equals to 0. And this is 3z equal to 0. So if you observe, this is z equals to 0. Right, this from this equation we will getting z equals to 0. इसमें substitute करोगे तो obviously y 0 मिल जाएगा. Z and y substitute करोगे तो x भी 0 मिल जाएगा. Correct. So we have, this is what is trivial solution, that is x, y and z all are equal to 0. So the question was, does the system has non-trivial solution? So obviously no, it has only a trivial solution. So I hope this video is clear. आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कंडीशंस फॉर चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लिए उसके बेस्ड. अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शंस. अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.